this was all about the different stages of Indian history that I told you: Vedic period, Buddhist period, medieval period, and another is British age. The next period is post independence period. स्वाधीनोत्तर भारत वर्षरे प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण पाई बा सामग्रिक भाव में शिक्षा व्यवस्था एक व्यापक परिवर्तन आने कौन सब पदक्षेप निया तार इतिहास कौन यू ऑल नो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 15th August and the Constitution of India came into force in the year 1950 26th January. These two important days, national days, we observe as an Indian. So after 1947, that means just after independence, first initiative by our government was taken in the year 1948. Remember this year, 1948. Indian government appointed a committee under the chairmanship of Sarvapalli Radhakrishnan, our former President of India, eminent educationist, scholar, the great philosopher, जड़े दार्शनिक भाव में प्रख्यात शिक्षाविद भाव में एवं पूर्वतन आमर जे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तांकर नेतृत्व रे तांकर तत्वावधान रे तांकर पौरोहित्व रे सर्वप्रथम शिक्षा आयोग भारत सरकार गठन कले. दैट इज कॉल्ड 1948. यू मे से राधाकृष्णन कमिशन, यू मे से ऑल्सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन. यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मध्य कहा जाए. And the basic, the purpose behind setting up of this committee was to bring desirable change in higher stage of education, university stage of education, that is needed for India. Education was neglected during British period. The Britishers, they were not interested on education of India. So, in the post-independence period, being ourselves a developing nation, what should be the strategy? Because education is the key of development. A nation is a developed one that depends on the extent its people, they are educated, literate, conscious, alert. That's why education is the most fundamental aspect of development. So 1948, Radhakrishnan Commission emphasized to bring a drastic change in the system of education in the university stage. विश्वविद्यालय स्तर में एक व्यापक परिवर्तन आनिबा. ओ क्षेत्र रे परिवर्तन आना जीवो. What should be the aim of education during university stage? What should be the curriculum? पाठ्यक्रम कौन हेबो? What should be the method of teaching? शिक्षा प्रणाली कौन हेबो? What should be the medium of instruction? शिक्षादान करिवार माध्यम को भाषा हेबो? What should be the role of teacher? शिक्षकर भूमिका कौन हेबो? And what should be the role of स्टूडेंट छात्र मानकर भूमिका कौन हेबो एक गणतांत्रिक राष्ट्र रे तांकर दायित्व कौन रही एवं विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर केते वर्ष विशिष्ट हो. व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, टाइम ड्यूरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेज, ऑल दिस एई सब ऊपर चर्चा करा जाइथिला विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन कमिशन द्वारा एवं सरकार को तार सुपारिश से प्रदान करते. This commission recommended the government that these are the defects, demerits, drawbacks found in the system of education starting from your British period. So let us have a change in the existing system of education
and a new Indian system of education needed for Indian was recommended to government. से ऊपर सुपारिश से करी. Again in the year 1952, under the chairmanship of Dr. L.S. Mudaliar, Lakshmana Swamy Mudaliar, he is also an eminent educationist. से जड़े होते मध्य प्रवीण धुरीण शिक्षाविद. तांकर नेतृत्व रे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 50 to 53 कमिशन को आम मुदालियर कमिशन कहि परिबा किंबा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन कहि परिबा. इंग्रेज शासन काल रे सेकेंडरी शिक्षा व्यवस्था जो विपर्यस्त अवस्था रही से की प्रकार परिवर्तन अणा जाई परिबो एवं सेकेंडरी शिक्षा स्तर गुणात्मक विकास किपरि हासिल करा जाई परिबो भारत वर्ष रे से दिगरे आवश्यक सुपारिश सरकार को करिबा पाई. अर्थात शिक्षार लक्ष्य रे कौन रहिबा कथा, पाठ्यक्रम कौन हेबा कथा, शिक्षा प्रणाली कौन हेबा कथा, को भाषा रे सेकेंडरी स्तर रे शिक्षा प्रदान करा जिवो, शिक्षकर भूमिका कौन हेबो, छात्र छात्री को भूमिका कौन हेबो एवं सेकेंडरी शिक्षा स्तर केते वर्ष विशिष्ट हेबो, टाइम ड्यूरेशन केते रहिबो, ए संबंधी सुपारिश करिबा पई सरकार एई कमिटी गठन करिथिले एवं तार सुपारिश मध्ये 53 मसिया रे 1953 रे सरकार को प्रदान करा जायथिला. इन द ईयर 1964-66 another commission was set up, that is called Indian Education Commission, or you can say Kothari Education Commission, because the chairman of this commission was Dr. D.S. Kothari, another eminent educationist of India. तत्कालीन भारतर से जने प्रवीण शिक्षाविद डॉक्टर डी.एस. कोठारी तांकर नेतृत्व रे तांकर सभापतित्व रे आउ एक कमिटी गठन करागला. सेही एवं सेही कमिटी सरकार को मध्य अनुरूप भाव रे पूर्वर दुईटी कमिशन पर सुपारिश कले. उस को ऊपर कले से your University Education Commission recommended only on university stage. 50 to 53 Mudaliar Education Commission recommended only on secondary stage. But remember it, Indian Education Commission or Kothari Education Commission recommended the government for a change in the entire stages of education, whole stages of education, starting from primary to university. अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, डिग्री स्तर, महाविद्यालय स्तर, that is graduation stage and post graduation stage. अर्थात आरंभरू शेष पर्यंत जेतिक स्तर आमर शिक्षा व्यवस्था भीतर अंतर्भुक्त रही प्रत्येक स्तर रे की प्रकार व्यापक परिवर्तन आवश्यकता रही शिक्षार लक्ष्यटार आरंभ करी शिक्षक एवं छात्र छात्री भूमिका पर्यंत से संबंधी सुपारिश 1966 मसीह कोठारी एजुकेशन कमिशन सरकार को प्रदान करते. आफ्टर दैट इन द ईयर 1968 it was decided that let there be an uniform system of education for the whole country. समग्र भारत पई एक कॉमन शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करिया पे एक चेष्टा करागला बा से समय मध्ये गोटे कमिटी गठन करागला ताहा को हमें जातीय शिक्षा नीति आयोग बोली कहूछु in the year 1968. Again in the year 1986 a full-fledged national policy on education was set up, and by that time Rajiv Gandhi was the Prime Minister of our country. And the very purpose behind this national policy on education was to bring uniformity in the system of education in all the stages and in all the state and union territory. तार पूर्वरु भिन्न भिन्न राज्य मानकरे भिन्न भिन्न केंद्र शासित अंचल मानकरे भिन्न भिन्न तांकर निजस्व शिक्षा व्यवस्था था. से गोटे परिवर्तन आनी समग्र राज्य एवं समस्त केंद्र शासित अंचल माने एक समान प्रकार शिक्षा व्यवस्था भितर ही समान प्रकार शिक्षा व्यवस्था भितर से अंतर्भुक्त करवा. So to bring uniformity throughout the country so far as education of primary stage is concerned, secondary stage is concerned, higher secondary stage of education is concerned,
and university stage of education is concerned. And its reflection, 1986 National Policy on Education, the most vital decision taken in this period for this policy is your 10+2+3 system of education. जातीय शिक्षा नीति आयोग 1986 सर्वश्रेष्ठ दान अवदान होउची जे 10+2+3 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अर्थात 1986 जो शिक्षा व्यवस्था जातीय शिक्षा नीति आयोग ग्रहण करागला तार परवर्ती समय समस्त राज्य मानक एवं केन्द्र शासित अंचल मानक वर्तमान 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रचलित रही। एट द लास्ट इन द ईयर 1992 1992 मसीह another committee was set up that is called the review committee. ताहा होउची एक तर्जमा कमिटी। कोन तर्जमा करा जिवो? स्टार्टिंग फ्रॉम योर 1948 राधाकृष्णन कमिशन, 52-53 मुदालियर एजुकेशन कमिशन, 64-66 कोठारी एजुकेशन कमिशन और इंडियन एजुकेशन कमिशन, 1968 that is national policy on education, 1986 national policy on education. What were the recommendations? How the recommendations have been implemented by the government, and after implementation what we have achieved till date. आज पर्यंत समस्त शिक्षा आयोग मानकर सुपारिश को कार्यान्वयन रे आनी आमे कौन हासिल करि पारिछे बा स्वाधीनोत्तर भारत वर्ष रे 47 पर ठारू 1992 भितरे आमे शिक्षा क्षेत्र रे की प्रकार परिवर्तन की प्रकार गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन आमे हासिल करि पारिछे ताको तर्जमा करिवा पई तार व्याख्यान करिवा पई तार अनुसरण करिवा पई 1992 रे एक तर्जमा कमिटी सरकार द्वारा नियुक्त करा जायतिला। And also this committee, by going through all this commission and committee and their recommendation, recommended finally to the government to bring another certain changes in the existing system of education, prevailing system of education. That we shall start discussing from tomorrow about your expansion of primary education, free and compulsory education, different problem that we are facing, what should be the solution, and how 100% universalization of primary education can be achieved in our country. आज पे एतिक रखिबा। थैंक यू। समस्ते सेफ रह, घरे रह, ऑनलाइन क्लास टाइम टू टाइम जहाँ नोटिस रे तुमको दिया जाउची ग्रुप रे चढ़ा जाउची से अनुसार प्रत्येक विषय रे कर एवं सर्वदा कॉन्फिडेंट रह जे निर्दिष्ट समय सीमा भितर ऑनलाइन क्लास माध्यम रे मध्य आमे सबु विषय गुड़ी को पढ़ी पारिबु, बुझी पारिबु एवं परीक्षा मध्य देई पारिबु एवं भल नंबर मध्य पास। समस्त आउथर धन्यवाद।